Namaskar. Now we are going to study very interesting lesson, that is cell, the unit of life. Why cell is considered as unit of life? Because all living organisms are made up of cell. Cells shows metabolism. Metabolism means anabolism plus catabolism. Now, what is metabolism? That concept is very important. जैसे कि फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर they will combine together to form glucose molecule in the presence of light, means light energy is taken to bring about combination of carbon dioxide and water, that is anabolism. Means two small molecules are combined together to form a larger molecule, that is called as anabolism. Continuously in living body, anabolism occurs. Anabolism का मतलब मैंने अभी बताया, जैसे हम खाना खाते हैं तब जो चीज हो रही है वो है कैटाबोलिज्म, बिकॉज वी आर ईटिंग लार्जर बायोमोलिक्यूल्स. For example, carbohydrates, proteins, nucleic acids, vitamins. All these larger molecules are cut down in our body by the process of digestion to form simple ingredients, amino acids, sugars, glycerol, fatty acids, etc., nucleotides, etc. And they are then again utilized to form our body mass, our body proteins, human proteins, or the carbohydrates, or DNA, RNA, fats, sebum, etc. तो हम जो भी खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है. सोचना है आपको, हम जो भी खाते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं. डाइजेशन से वो छोटे में कन्वर्ट होंगे. दे will be cut down by the catabolic process of digestion to form simple molecules. These simple molecules are again utilized in our body in the anabolic process, means making over process or formative process, to form larger molecules of our body. Means again our body proteins, our body fats, our body carbohydrates, DNAs, RNAs, they will be produced from that digested material, and that process is called as anabolism. So not only in our body but in a complete cell, catabolism and anabolism are continuously going on. Hence cell is living being. It is autonomous body. उसको किसी की ज़रूरत नहीं रहती है, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं. पैरामेशिया, यूग्लिना, अमीबा, these are what? Unicellular creatures. In them also metabolism is continuously going on in our body or in any multicellular body. Metabolism in any multicellular body, various cells are working together to bring about body functions, to bring about development, to bring about growth. Means they are also the unit is cell. यहाँ पे भी हमारे शरीर में जो यूनिट है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल of our body is cell.
In our body also, the structural and functional unit of life is cell. In multicellular organism as well as in unicellular में एक ही सेल होती है, multicellular में trillions of cells are present and they are working together to form various structures of the body and to bring about various functions of the body. Hence, cell is considered as unit of life. Hence, cell is considered as unit of life. Let us see what is written about cell here. First in NCERT book. Unicellular organisms are capable independent existence and performing the essential functions of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is fundamental structural and functional unit of all living organisms. इसका मतलब क्या होता है? सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूग्लिना पैरामेशिया वेरियस यूनिसेल्युलर algae etc they have their independent existence, they are not depending on any other things for life, so they are having independent existence performing all essential functions. जो भी functions हमारे शरीर में हो रहे हैं, specifically the metabolism that also occurs in any unicellular creature also. So various functions. अब various functions का मतलब मैं आपको बताती हूँ. प्रोटीन सिंथेसिस, एक्सक्रीशन, जो भी नहीं चाहिए सेल के शरीर में वो बाहर डाला जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है. सेल बाहर से कुछ लेती है, उसे डाइजेस्ट करके फिर से खुद को डुप्लीकेट कर सकती है या खुद की ग्रोथ करवा सकती है. तो जैसे हमारा पूरा शरीर है वैसे ही सेल है कि जो बाहर से कुछ लेती है, खुद का शरीर बनाती है. ऑर्गेनेलीज उनकी काम कर रही है. इंटरेस्टिंगली वेरियस ऑर्गेनेलीज आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हो रहा है. गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम है पैकेजिंग एंड डिस्पैच ऑफ मॉलिक्यूल्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और प्रोटीन की चेन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैनिपुलेट होके और लार्जर प्रोटीन्स वहाँ पे बनते हैं. न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर, मेन ऑफिस ऑफ द सेल. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डील्स विथ, यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट डील्स विथ lipid and carbohydrate metabolism, and rough endoplasmic reticulum deals with protein synthesis and its manipulation. So various functions, lysosomes, they bring about digestion, catabolism in the cell. Then peroxisomes, centriole is there which helps in peroxisomes. यहाँ पे इस फिगर में नहीं दिखा है बट दे आर प्रेजेंट इन एनिमल एज वेल एज इन प्लांट सेल्स. Peroxisomes, they are also catabolic in nature because they have catalytic enzymes which brings about catabolism. Then ये जो centrioles रहते they bring about cell division. So many functions are present in such a small cell which measures only in micron. माइक्रोन का मतलब होता है, लिखिए 1 माइक्रोन is equal to 10 raised to minus 6 meter. 1 micron is equal to 10 raised to minus 6 meters. Then write 1 nanometer, nm. 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter.
10⁻⁹ meter. And write one more thing. 1 nanometer is equal to 10 angstroms. कैपिटल ए निकाल के उसके ऊपर ऐसे डिग्री जैसे 0 लगाना है. That is angstrom unit. 1 nm nanometer is equal to 10 angstrom, capital A. 1 nanometer is equal to 10 angstrom. A के ऊपर जैसे आप रेस्ट टू पावर लिखते हो ना, उसी तरीके से 0 लिखना है. उसका मतलब होता है डिग्रीज, एंगस्ट्रॉम डिग्रीज. ओके, देखिए so cell is having independent existence and perform all essential functions of life independently. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. अगर सेल से कुछ कम है, यानी सेल्स में जो भी स्ट्रक्चर्स मैंने अभी आपको दिखाए वो नहीं है अगर, तो उससे लाइफ फॉर्म हम नहीं बोल सकते, लाइव फॉर्म हम नहीं बोल सकते हैं. ये तो तब की बात है, लेकिन अभी हमें पता है कि जो वायरसेस रहते हैं they do not have any cellular organization, then also they are considered as live. वो जो एक्सेप्शंस है सेल थियरी के लिए वो हम बाद में देखने वाले हैं. These all are exceptions for cell theory. So पहले सेल थियरी तो देख लेते हैं, सेल के बारे में पूरा ज्ञान ले लेते हैं. उसके बाद जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाते हैं ऐसे क्रीचर्स के बारे में भी हम जानने वाले हैं. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. If the question is there for 1 mark here, then these two are the reasons why cell is considered as a fundamental structural and functional unit of all living organisms, because that has independent existence and perform all essential functions of life, means metabolism independently, like that of multicellular organism. Antony Van Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of the microscope and its important leading to electron microscope revealed all the structural details of the cell. You see, discoveries related to cell. He is Robert Hooke, जिन्होंने माइक्रोस्कोप के साथ सबसे पहले बार सेल देखी. एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक का नाम आता है क्योंकि cell is the unit of life that was first given by Robert Hooke. Robert Hooke discovered cell while looking at a thin slice of cork. रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था ना वो इस प्रकार से था. ये देखिए, रॉबर्ट हुक जो 1600 to 1700 ईस्वी में हुए हैं, उनका जो माइक्रोस्कोप था वो इस प्रकार से था. यानी ये तब हुए जब हमारे यहाँ पे औरंगजेब और शिवाजी महाराज थे. शिवाजी महाराज यानी तब उन्होंने इस प्रकार से कुछ लेंसेस को एडजस्ट करके, दीज आर मैग्नीफाइंग लेंसेस को एडजस्ट करके एक थिन कॉर्क के स्लाइस में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखा कि जो यूनिट माना जाता है लिविंग बीइंग का, दैट इज सेल. तो हम ये बोल सकते हैं, देखिए उन्होंने जो सेल देखी ना वो इस प्रकार से थी. मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ.
हाँ, उन्होंने जो देखा वो इस प्रकार से था। रॉबर्ट हुक 1665, ल्यूएनहॉक 1674, श्लेडन एंड श्वान 1838, श्वान 38-39, श्लेडन एंड श्वान, वर्चो 1855। हम बोलते हैं कि cell theory is given by Schleiden and Schwann, but in the cork cell, Robert Hooke first observed the tiny chambers and he called them as cell because the meaning of cell is tiny chamber. Meaning of cell is chamber. Cell का मतलब होता है एक vacant chamber. उनको क्या दिखा? You see, only vacant chambers are were seen by him. Only vacant chambers were seen by him. ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सिर्फ वैकेंट चेम्बर्स। और कॉर्क का मतलब क्या होता है? ये कॉर्टिकल लेयर होता है प्लांट्स का। कॉर्टिकल का मतलब है होता है आउटर। प्लांट का अगर ये स्टेम है तो स्टेम का एक आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क, कॉर्टेक्स के बाहर रहने वाला। तो इसमें उन्होंने देखा कि सिर्फ वैकेंट चेम्बर्स है और उन्हीं को उन्होंने बोला सेल। 1665, बहुत पहले। And the microscope used by him was like this, ये जो मैंने दिखाया। So again, Robert Hooke utilized very primitive microscope because at that time the discoveries were not there. This is the photo of Robert Hooke. Robert Hooke, 1635 to 1703. Discovery of cell, okay. In the thin slice of cork. Cork का मतलब मैंने बताया कि सबसे बाहर का स्टेम का कवरिंग जो रहता है उससे बोलते कॉर्क। He observed honeycomb-like structure. He thought that cells only existed in plants and fungi, क्योंकि उन्होंने एनिमल के शरीर के बारे में देखा नहीं था, उनकी स्टडी नहीं की थी। एनिमल के टिश्यूज की स्टडी उन्होंने नहीं की थी। इसीलिए उन्होंने बोला कि cells must be existed in plants and fungi only because he observed only plants and fungi with his very primitive microscope. एक बात आपको याद करना है कि जो सेल सबसे पहले देखी गई इनमें कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं थी और ये डेड सेल्स थी। This concept is very important. Robert Hooke observed dead cells, which was without any cell organelles. From the cork, because cork is the dead structure present in plants, stem of plant. Okay? तो जो सबसे पहले सेल देखी गई रॉबर्ट हुक ने जिसे देखा था that was the dead cell. That was sclerenchymatous cell of cork. All things are very important. That was sclerenchymatous cell of cork of plant stem. Okay. Then the next, you must write the name of his book. It is Micrographia. Micrographia written by Robert Hooke. Physiological description of minute bodies made by magnifying glasses. ये देखो उन्होंने जो 16th सेंचुरी में ये बुक छापा था उसका ये कवर पेज है माइक्रोग्राफिया। See, Micrographia. This book was written by Robert Hooke. You must remember the name of this book, Micrographia by Robert Hooke.
Micrographia by Robert Hooke. Now, this is photo of Antony Van Leeuwenhoek. He was lens maker. Antony Van Leeuwenhoek, he was लेंस मेकर. वो अलग अलग प्रकार के लेंसेस बना के उनके नीचे कुछ दिखता है क्या इसके ऊपर काम कर रहे थे. तब उन्होंने लिविंग सेल्स पहले सबसे पहली बार देखी. Means the living cell was first observed by Antony Van Leeuwenhoek, not by Robert Hooke because he observed dead cell. तो उन्होंने जितनी भी सेल्स यानी एंटोनी वैन लुएनहॉक ने जितनी सेल्स सबसे पहले देखी उनके नाम यहाँ पे दिए हैं. आपको ये लिखने हैं. You can note down them on your book also. Leeuwenhoek observed for the first time white blood cells. Red blood cells means RBCs. White blood cells means WBCs. Yeast cells, ये Saccharomyces cerevisiae. Yeast जो फर्मेंटेशन में मदद करता है. ईस्ट सेल उन्होंने सबसे पहले देखी. स्पर्म जो ह्यूमन मेल गमेट रहता है उसकी भी स्टडी की और बैक्टीरिया को भी सबसे पहले उन्होंने ही देखा. So he observed all these cells for the first time. His microscope was like this. देखिए उनका माइक्रोस्कोप इस प्रकार से था. माइक्रोस्कोप सेल ब्रेक्स एवरी रिकॉर्ड. उन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था ना वो बाद में उनके मरने के बाद कई सालों बाद बहुत महंगे में बेचा गया. बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. अब तो आपको पता है माइक्रोबायोलॉजी के लिए सिवा कुछ भी नहीं है. We continuously deal with thousands, millions of microorganisms. Some are useful, some are hazardous for our living, for our life. Antony Van Leeuwenhoek, 1632 to 1723, okay? Perfects the simple microscope and observes cells and microorganisms. He discovered bacteria in 1674 and 4 years later he discovered protozoa. यानी प्रोटोजोआ की भी उन्होंने ही डिस्कवरी की है. बैक्टीरिया भी उन्होंने ही सबसे पहले देखा. मैंने आपको बोला कि जो भी सेल्स उन्होंने सबसे पहले देखी उनके नाम आपने लिखने चाहिए. WBCs, RBCs, ईस्ट, बैक्टीरिया, स्पर्म, प्रोटोजोआ. ओके, ये उन्होंने जो यूज किया था ना ऐसा माइक्रोस्कोप है. He utilized such microscope. एंटोनी वैन लुएनहॉक. और ये स्पेसिमेन यहाँ पे रखता था वो और ऑब्जेक्टिव है यहाँ से देखा जाएगा. ये ऐसा पकड़ के स्पेसिमेन आगे नीडल के ऊपर रखा जाएगा और ऐसा माइक्रोस्कोप लाइट की तरफ फिर देखा जाएगा. लाइट की तरफ मूव करके देखा जाएगा. So this was very simple microscope used by Antony Van Leeuwenhoek. See his microscope uses a simple microscope with only one lens and was the first to describe bacteria. यहाँ पे भी दिया है. ये ल्यूएनहॉक ने यूज किया हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप है. अब तो बहुत अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोप. हम कितनी भी छोटी चीज देखने की कोशिश करें तो वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उससे भी कई अधिक अच्छे रहने वाले माइक्रोस्कोप्स अभी डिस्कवर हुए. This was the microscope used by Leeuwenhoek in 1600s. British microscope 1865. हैंड माइक्रोस्कोप 70s में जो यूज होता था. 1927 में जो विंकल ज़ेइस डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप इसे बोला जाता है. डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप. और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. राइमोस्टर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो नॉर्मली लैब्स में होता है.
एक्चुअली प्रोटोजोआ को वगैरह अगर देखना है तो ऐसे सिंपल डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप रहते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में इन्हीं के जैसे माइक्रोस्कोप्स रहते हैं जिनमें 3 मैग्निफिकेशन पावर रहने वाले लेंसेस रह सकते हैं। ऑयल इमल्शन लेंस भी उसमें रहता है। This is the name of book written by Antony Van Leeuwenhoek. The names are also very important. Micrographia by Robert Hooke and Nature. इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम? नेचुरे। दिस इज लैटिनाइजेशन ऑफ नेचर। नेचुरे, RAE, ये जब आता है ना, जैसे हमने फैमिलीज के नाम में फैबेसी, CEAE ऐसे लिखा जाता है, तो RAE ये जो है ना, ये लैटिन में ऐसे लिखा जाता है। सो नेचुरे, okay, that is the name of book written by Antony Van Leeuwenhoek. NATURE, ये उन्होंने यूज किया हुआ माइक्रोस्कोप है, और उन्होंने जितने ऑर्गेनिज्म सबसे पहली बार देखे, इनके भी फोटोज है यहाँ पे। This is again the photo of Antony Van Leeuwenhoek. He is considered as father of microbiology. Two names are proposed for being father of microbiology. Antony Van Leeuwenhoek, he was not the biologist, he was only a lens maker. लेकिन उन्होंने ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे कि जो हमारे लिए यूजफुल या हजार्डस हो सकते हैं। One more great scientist's name is there as father of microbiology, and that is Louis Pasteur. उनको भी बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उन्होंने बहुत सारे काम किए माइक्रोबायोलॉजी के लिए। उनके बाद ही माइक्रोबायोलॉजी ऐसे साइंस करके फ्लरिश हुआ। लुइस पाश्चर, he is Robert Brown who discovered the nucleus. He discovered nucleus and protoplasm का जो कंसेप्ट है वो परकिंजे ने दिया हुआ है। Protoplast means what? Cytoplasm plus nucleus is equal to protoplasm, means living material present in cell. Protoplasm का मतलब क्या होता है? Living material present in cell, that is called as protoplasm. What do you mean by protoplasm? Living material present in cell. तो आपको लिखना है protoplasm is equal to cytoplasm plus nucleus. Cell wall is not included in that. Again, cell wall is not included in protoplasm because protoplasm means only living material within the cell that constitutes cytoplasm and nucleus. Plasma membrane भी उसमें आएगा. It is also the living material. जहाँ पे मोड़ तोड़ होता है, चयापचय होता है या मेटाबॉलिज्म होता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिविंग मटेरियल. एंड द लिविंग मटेरियल ऑफ सेल इज nucleus, cytoplasm with cytoplasmic organelles, and plasma membrane. Minerals present within the cell are called as non-living material, and that is a part of deutoplasm. DEUTOPLASM, deutoplasm. Okay, you see, nucleus, cell organelles, cytoplasm, and this is plasma membrane. तो ये सभी चीजें लिविंग में आती है, प्रोटोप्लाज्म में आती है, but not the cell wall. In case of plant, we know that
cell wall is present. One more definition. Yeah. Now see, I will tell you two definitions. They are very related with each other. First, protoplasm. Dash देके लिखिए living material of the cell. Living material of the cell, that is called as protoplasm. Here, protoplasm includes nucleus, cytoplasm with various organelles, just like that of chloroplast, endoplasmic reticulum, mitochondria, etc. And plasma membrane, all that is living. So living material of this cell is called as protoplasm. Then write protoplast. For learning further biology means tissue culture specifically, the concept of protoplast is there. Protoplast is equal to cell without cell wall. Write it down. Protoplast is equal to cell without cell wall. Cell without cell wall is called as protoplast. Then you see, यहाँ पे हम डिस्कवरी देख रहे थे. परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का कंसेप्ट दिया है लिविंग मटेरियल विद इन द सेल एंड द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन. कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन. देखिए रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस. Remember all these names, they are very very important. Concept of nucleus was given by Robert Brown. ये जो दिख रहा है आपको, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. Robert Brown with the photo of nucleus. He is Robert Brown, nucleus, who discovered first the nucleus. And protoplasm concept was given by Purkinje. Protoplasm. Okay. Then these three persons are there who are well known for giving cell theory. First, we will see about Schleiden and Schwann. Schwann and Schleiden. Schwann and Schleiden. Schleiden and Schwann. He was German and Schwann was British. Both of them proposed the cell theory. What is that? Let us see. Matthias Schleiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. बहुत सारे प्लांट्स के टिश्यूज की उन्होंने स्टडी की, पढ़ाई की, ऑब्जर्व किया टिश्यूज को, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. क्योंकि ये 1938 की बात है, तब तक माइक्रोस्कोप अच्छी तरह से डेवलप हुआ था. अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोप तब अवेलेबल थे. उन्होंने देखा कि सभी प्लांट्स ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स से बनते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज सेल्स. At about same time, Theodore Schwann, British zoologist, you must remember, Schleiden, German botanist, and Schwann, British zoologist. Schleiden in 1813, Schwann in 1839. Schwann was British zoologist. All these lines are very important. Studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. He also concluded सभी सेल्स को एक बाहर का थिन आउटर लेयर होता है, यानी हम बोलेंगे कि श्लेडन ने सबसे पहले ये बताया कि सभी प्लांट की जो सेल है वो कुछ बेसिक यूनिट से बनी है, उनको बोलेंगे सेल.
सभी प्लांट्स ये कुछ बेसिक यूनिट्स से बने हैं, उनको हम बोलेंगे सेल। और शिवान ने ये बताया कि सभी एनिमल्स की सेल्स के ऊपर एक थिन कवरिंग होता है, थिन आउटर लेयर होता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जा सकता है। So the concept of plasma membrane was given by Schwann. Repeating again, concept of plasma membrane was given by Schwann. Remember, you will have to mug up and keep in mind always every line which is given in NCRT to get good marks in all India level various exams like ICAR, pre-medical exams, pre-veterinary exams, pre-pharmacology exams, pre-biotechnology exams, pre-genetic engineering exams, various exams are there. For all these exams are based basically on the NCRT book and state-wise various state board books. Hence here we are learning the state board as well as state board of Maharashtra as well as CBSE book, NCRT book. Studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. He also concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. Bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. तो फिर से एक बार देखते, इन्होंने बताया, स्लेडन ने बताया, जर्मन बॉटनिस्ट जो थे, कि सभी प्लांट्स ये कुछ बेसिक यूनिट के बने हुए हैं जिनको सेल बोला जा सकता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से वो बने हुए हैं। और श्वान ने बताया कि जो एनिमल सेल्स को, बिकॉज ही वाज zoologist, hence he told that all animal cells have a thin layer surrounding to them which can be called as plasma membrane, which is now known as plasma membrane. He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of a plant cells. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. This sentence is very important because what Schwann proposed, bodies of all plants and animals are composed of not only cells but the products of cells. Hence, this sentence is important. Bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. Okay? They are composed of cells and products of cells. Not only cells but also the products of cells. Slater and Schwann together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as how new cells were formed. यानी सेल थियरी हमें नहीं बताती है कि नई सेल किस तरह से फॉर्म होती है। वो सेल के बारे में ये तो बताते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स ये सेल से बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए। सेल प्रोडक्ट का मतलब मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा शरीर है वो बहुत सारे सेल्स का बना है, लेकिन सभी सेल्स के बीच में कुछ मैट्रिक्स भी रहता है। दैट इज एक्चुअली द सिक्रीशन ऑफ सेल। इंटरस्टिशियल फ्लूइड रह सकता है, दैट इज अगेन द सिक्रीशन of cell, or that is the body fluid. Means not only cells but the cell products are also present in the body. ये सिर्फ स्लेडन और श्वान की थियोरी बताती है कि the body of every organism is made up of cell and cell product. लेकिन वो ये नहीं बताती है कि सेल बनी कहाँ से, कैसे, क्या वो ऐसे ही बन जाती है? वहाँ पे कुछ पानी है, कुछ मिनरल्स है, कुछ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है,
तो वैसे अपने आप सेल बन सकती है क्या? नहीं। इसलिए रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में ये बताया कि omnis cellula is cellula means cells are formed from pre-existing cells. सेल्स हरदम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही फॉर्म होती है. Cells will form from pre-existing cells. That is called as omnis cellula is cellula. Remember this sentence. Cells form only from pre-existing cells. That concept was given by Rudolf Virchow, 1855. Omnis cellula is cellula. Cells are formed from pre-existing cells. Rudolf Virchow, 1855. He modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape. Cell theory, as understood today, is, you must remember these two sentences. All living organisms are composed of cells and products of cells. All cells arise from pre-existing cells. Only two concepts are given here for the cell theory. Various other are there, but only two are depicted here. So, what are they? All living organisms are made up of cell and cell products, and all cells arise from pre-existing cells. Rudolf Virchow. Okay. Then we will see overview of cell, but before that, let us read what is given in report. ये चीज़ें बहुत important है. Simple microscope can magnify image 50 to 100 times, but compound microscope can do so 1000 times or more. Underline these sentences, they are very important. सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर होती है 50 to 100 टाइम्स. यानी जो भी छोटा सा क्रीचर है वहाँ पे सेल है, वो हमें 50 से 100 टाइम्स बड़े होके दिखती है. But a compound microscope can do so 1000 times or more. In the microscope we use in the laboratory, a beam of light is used to make things visible. Hence, it is light microscope. Why that microscope is called as light microscope? Because beam of light is used. वहाँ पे नीचे की तरफ एक लाइट रहता है, वो लाइट पहले ऑन करेंगे और फिर हम लेंसेज से देखेंगे कि जो भी सेल वहाँ पे स्लाइड पे रखी हुई है वो कितने बड़े होके हमें दिखती है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो भी रहता है, लाइट माइक्रोस्कोप जो रहता है, लाइट माइक्रोस्कोप मीन्स इट इज नॉट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो जो नॉर्मली लैब्स में यूज होने वाले माइक्रोस्कोप्स है, वहाँ पे जो भी सेल है वो हमें 1000 टाइम बड़े होके दिखती है. ओके, सो दैट विल बी मैग्निफाइड 1000 टाइम्स. Any small cell will be magnified 1000 times in light microscope. In simple microscope, that will be magnified 50 to 100 times, 1000 times in light microscope, compound microscope, and 50,000 5 lakh times 5 lakh times that small creature or cell will be magnified through electron microscope. The magnification power of electron microscope is 5 lakh times. यहाँ पे भी देखिए ल्यूवेनहॉक का
1600s में वापरा गया जो माइक्रोस्कोप है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है. आई हैव शोन यू दैट पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप. देखिए कुछ वैल्यूज दी है. द स्मॉलेस्ट सेल कैन बी सीन इन द माइक्रोप्लाज्मा. So some more information is given here than that of NCERT book. The smallest cell is always a mycoplasma. It is smallest bacteria. Prokaryotes में ही आता है mycoplasma, that is smallest. And remember the diameter length of that mycoplasma 0.3 micrometer means micron. ये mu m का मतलब होता है micrometers means micron. Okay. सो 0.3 माइक्रॉन्स का रहेगा माइकोप्लाज्मा. ये है स्मॉलेस्ट सेल. लिखिए आप स्मॉलेस्ट सेल, गिव अ डैश, माइकोप्लाज्मा अगेन डैश, 0.3 माइक्रॉन्स इन लेंथ. 0.3 माइक्रॉन्स इन लेंथ. देन बैक्टीरिया, नेक्स्ट लाइन में लिखिए बैक्टीरिया डैश 3 to 5 microns. And the largest cell in the world is ostrich egg. सिंगल सेल रहेंगी. जब वो एग लेइंग होता है तब वो एक ही सेल रहती है, लेकिन जैसे जैसे उसमें बच्चे की डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे सेल डिवीजन होके देन many cell multicellular ostrich will form, embryo will form and then small ostrich will form. But when the egg is laid, it is unicellular. So ostrich egg is the largest cell in world, nearly 15 centimeters. इतना यहाँ से यहाँ तक ये करीबन 15 सेंटीमीटर से. ठीक है. Longest cells are nerve cells. जो ब्रेन में सेल्स होती है उसमें लंबा सा एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं. नर्व सेल, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी. Longest cell, nerve cell. Largest cell, ostrich egg. Smallest cell, mycoplasma. Bacterial cell, 3 to 5 micron. Mycoplasma, 0.3 micron. पूरा याद करो. This para is very important. I think we have completed the introduction of cell. The next part of the cell will be seen in next period. Till then, bye.